अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं सुदन गली में। जिन लोगों को सुदन गली के बारे में पता, ये इस्लामाबाद से 4 घंटे के फासले पे सुदन गली है। अबाउट 10,000 फीट हाई एल्टीट्यूड है इसका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 3 गेस्ट, बल्कि 4 गेस्ट हैं लेकिन 3 यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मैथ्यूस, जो कि ऑस्ट्रिया से हैं। इनके साथ बैठे हैं लूकस, ये भी ऑस्ट्रिया से हैं। बाबर भाई हमारे अलमशहूर पाकिस्तान के, कहते हैं ना, हम इनको कहते हैं कि जी ही इज़ अ सुपर हीरो माशाल्लाह, डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी और पाकिस्तान में जितना ही काम कर रहे हैं, जैसा कोई और काम नहीं कर रहा, तो ये भी यहाँ मौजूद हैं और हमने सोचा चलें एक फ़ायदा उठाते हैं। ये जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हैं, उसमें ये जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ये जो बाहर से आए हैं, ये क्या वहाँ पे कर रहे हैं, इनसे कुछ हम सीखेंगे। फिर ये क्योंकि ख़ुद ये जो इनका मिशन था, ये 7 हफ़्ते के लिए आए थे क्लाइंबिंग के लिए, जो कि G2 है। G2 जो है वो K2 की रेंज का एक पहाड़ है जो 8,000 मीटर से बुलंद है। ये वहाँ पे गए थे, इन्होंने 6-7 हफ़्ते वहाँ गुजारे हैं और ये 7,000 मीटर पे जाके क्योंकि तूफ़ान आ गया तो ये अपना मिशन पूरा नहीं कर सके। सो अपनी एक्सपीडिशन अगले साल करेंगे, तो अगले साल ये फिर आ रहे हैं। हम इनको लेके यहाँ पे आ गए कश्मीर में और इनको हमने इस्लामाबाद दिखाया, इनको हमने मरी दिखाया और ये कश्मीर की मुख्तलिफ वादियाँ दिखाई। तो हमें सरप्राइज़ हुआ, हालाँकि इनकी कई एक्सपीडिशन ये पहले भी कर चुके हैं और उनके बहुत से दोस्त साथ थे, लेकिन किसी को भी पाकिस्तान की इस एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता। वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान में सिर्फ ऊंचे पहाड़ हैं जो कि खुश्क और बर्फ़ीले हैं, जहाँ पे गर्मी और सर्दी बहुत होती है, और बाकी जो है ग्रीन लैंडस्केप हमारा नहीं है। तो हमने इनको कल्चर से मुतारफ़ करवा रहे हैं इनको पाकिस्तान के, और साथ ही साथ इनसे हम फ़ायदा उठाएँगे कि ये जो स्पोर्ट्स वहाँ पे कर रहे हैं। ये दोनों हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, लूकस और मैथ्यूस। ये मल्टीपल स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, जिसमें कि ये माउंटेन क्लाइंबिंग तो करते हैं। आप खुद समझ लीजिए 8,000 मीटर पे जाके उसकी चोटी को क्लाइंब कर रहा है, तो किस लेवल का वो क्लाइंबर होगा, और विदाउट ऑक्सीजन। तो इनसे वो भी सुनेंगे हम। फिर इसके बाद ये पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो इनका मिशन ये था कि ये 8,000 फुट पे जाके उन्होंने क्लाइंब करना था, उसके बाद पैराग्लाइडिंग के ज़रिए, पैराशूट के ज़रिए इन्होंने नीचे वापस आना था। इसके अलावा ये स्कीइंग करते हैं, ऑस्ट्रिया क्योंकि फ़ेमस है स्कीइंग के हवाले से, तो स्कीइंग भी इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। फिर इसके बाद ये बल्कि ख़ुद ये लूकस जो हैं वो बास्केटबॉल के कोच रहे हैं और ये बास्केटबॉल टीम को भी रन करते रहे हैं। इसके अलावा ये इनके ये पूरे अपने अंदर, जिसको कहते हैं जी, ये पूरा एक इदारा है, एक यूनिवर्सिटी है। दे आर वेरी यंग। सो आई विल हैंड ओवर टू मिस्टर बाबर। बाबर साहब कुछ अपना इसका इंट्रो देंगे, उसके बाद फिर हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। इनसे ज़रा हमारी गुफ्तगू इंग्लिश में होगी, तो ये जो हम इंट्रो दे रहे हैं ये ताकि हमारे लोगों को पता हो कि बैकग्राउंड क्या है। जी बाबर भाई। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मज़हर भाई हमारे बड़े एक्टिव बंदे हैं। आसिफ टिम्बकोटी हमारे कैमरे के पीछे हैं, उनका तारुफ भी कराता चलूँ। लूकस और मैथियस हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपीडिशन here. First, I would like you to introduce yourself, Lucas, and introduce yourself, Matius. So thanks guys for having us on this beautiful place for a talk. My name is Lukas. I live in Austria, and I've been the past 6 weeks in Pakistan for expedition. Hallo, ich bin der Matius. Ich freue mich, dass ich da sein darf in dem Land, und bin sehr geehrt, dass ich da im Land die Expedition machen darf. Matthias, you have been to Pakistan how many times? Like, this is your first time, second time? Well, you both can speak just a little bit of English, no problem. I know his English is very good, but your English is very good also. So you can speak a little bit English, no problem. Or if you want to speak in your language, we would translate it. This is your first trip here? Yes, this is my first trip. The place is very nice, and the people are very friendly, and we are very happy in this country. So yes, it's our first expedition here, so we are used to some more technical climbing in the Alps because we have much lower peaks, and the idea was like to experience high altitude, which is Pakistan is famous for in our country, and we really enjoyed the experience. Okay, this Pakistani mountains, what is the difference between Pakistani mountains and the Nepal? We know the place called Nepal.
And you've been to Nepal, and what is the difference between the Pakistani mountains and the Nepal mountains? Unfortunately, we hadn't had the chance to be in Nepal so far, Okay. but my dad is a mountaineer, Okay. a mountain guide also, so he has been doing some higher altitude mountaineering in Nepal. So we had loads of pictures and like a relative who can um, who experienced the Nepal mountains so far. And in all, I would say the diversity here, from having like these green mountains here in Kashmir to like having deserts and then having these high altitude mountains, which are very rough compared to Nepal, because in Nepal you have like loads of lodges and guest house and stuff. So here you're 6 weeks on the glacier, only in rock and ice. But having this rough experience is something we were searching for and really enjoyed. Okay. Uh, Matius, you are a great paraglider, as we know. I've seen your videos and you've been amazing. What is the environment in Pakistan? Like you've been to Skardu and everything. What is the environment? Is it good for paragliding? Is it bad? What is the difference? You like it here or not for paragliding? If you come in future for, especially for paragliding. For the paragliding is this country very very good. Okay. The Skado nation is for the paragliding amazing. The thermal vent and lots of items is amazing for the sports. If I can add something, it's like the skill level you need in Pakistan is like much higher than in the Alps. Like for you guys, just you have a like an idea how it works in our country. You have like loads of weather stations where you can like I can pull out my phone and I'm still in my bed and I can tell you like if it's flyable or not. And here you have to like trust your instincts and the skills, like because like the thermals are everything is bigger in Pakistan. Mountains are bigger, thermals are bigger, and landings are rougher. So the place is very very great, but the skill level you need is probably much higher than in Europe. नाज़रीन बात यह है कि जो ये दो चीज़ें इन्होंने बताई, एक तो यहाँ पे स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें एक फैक्टर ये है कि वहाँ पे अपना फ़ोन निकालते हैं और इनको वेदर का पता चल जाता है कि पैराग्लाइडिंग के लिए ठीक है कि नहीं, स्कीइंग के लिए ठीक है कि नहीं. हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें कुछ कमी पेशी है. उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ इन लोगों को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. वो ये कि जिस तरह इन्होंने बताया कि नेपाल है, वहाँ पे जगह जगह गेस्ट हाउसेस हैं, जगह जगह सर्विसेज हैं. यहाँ पे स्कर्दू से थोड़ा सा आगे ये लोग जाते हैं तो उसके बाद ये इनको अपनी इंस्टिंक्ट पे और अपनी लक पे रहना पड़ता है. पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की बहुत कमी है, इन चीज़ों को लाना पड़ेगा. मज़हर भाई आप कुछ चीज़ें ऐड कर रहे थे. बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जो कि ये लोग ऑब्ज़र्व करते हैं. पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स जो हैं और जो हमारे माउंटेन्स हैं वो बहुत गंदे हो चुके हैं और हम लोग सफाई ज़्यादा नहीं करते. और वो हालत ये है कि जब ये सिविलाइज्ड लोग भी वहाँ पे आते हैं तो फिर जब देखते हैं कि ये सब कचरा वहाँ पड़ा हुआ है तो ये वहाँ से आके फिर ये भी कोई इतना केयर नहीं करते कि अगर हम ये लोग इतना केयर नहीं कर रहे तो हमें उसमें ज़रूरत नहीं है. लेकिन दे आर कंसर्न कि जी हमें सफाई बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, चाहे हमारे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको हम साफ़ रखें. इसके अलावा जो इनका स्किल है, मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग क्योंकि हर साल हमारे एस्टिमेट के मुताबिक हज़ारों में लोग, 10,000 से ज़्यादा लोग फॉरेन टूरिस्ट आते हैं जो कि क्लाइंबिंग करने आते हैं और ख़ास तौर पे ये ऊपर जाते हैं, जिसमें ये हमारे हिमालयंस हैं, हिमालय रीजन्स हैं, फिर इसके अलावा देवसाई और इन प्लेन्स पे जाते हैं. तो अगर हम इन लोगों को स्पेशली हम सिर्फ टारगेट कर लें कि इन क्लाइंबर्स को 1 वीक ऐड कर दें इनके प्लान के अंदर कि इनको हम पाकिस्तान के दूसरे इलाके भी दिखाएं, ताकि क्योंकि ये जब एक्सपीडिशन करके वहाँ से आते हैं तो बहुत एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं. और अगर होता ये है कि 90% जो क्लाइंबर्स हैं
वो अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते। तो अगर आप रेशो उठाएं तो सक्सेस रेशो, ये तो उनको अचीवमेंट हो जाती है कि वो माउंटेन उन्होंने गए, वहाँ पे बेस कैंप पे गए, उसके बाद वहाँ पे देखा। लेकिन मेरा ये फिगर्स जो मैंने कल इनके साथ स्टडी की और फिर मैंने कुछ यूट्यूब पे भी सर्च किया, तो जो एक दफ़ा बंदा आता है और वो किसी वजह से, जिस तरह बताया, एक अनफोर्सीन, ये तो बहुत हार्ड लाइनर किस्म के, सख्त जान किस्म के लोग हैं। ये ज़्यादा हाइजीन की भी ज़्यादा परवाह नहीं करते रहे, ये बड़ा आसानी से, बल्कि ये ऑक्सीजन के बगैर रहते रहे। लेकिन बहुत से ऐसे हमारे टूरिस्ट हैं जो बाहर से आते हैं, जो बहुत नाजुक मिजाज हैं, वो क्लाइंबिंग के लिए वहाँ जाते हैं, तो उसके बाद जब वो उनका मिशन फेल हो जाता है या वो अपनी सक्सेस पे अचीव नहीं कर सकते, तो वो डिसहार्ट होकर वापस जा रहे होते हैं। और वो उसका फिर जब इंसान नाकाम होता है तो वो बहुत सी चीज़ों को ब्लेम करता है, वो दाएं बाएं की, वेदर को भी ब्लेम करता है, वो टेक्नोलॉजी को भी करता है, वो सब चीज़ों को करता है। अगर इनका हम जो जो एक्सपीडिशन इनकी होती है उसके क्लोजिंग के ऊपर हम अगर 1 वीक का इनको पाकिस्तान का टूर करवा दें, इनको इस तरह की, जैसे हम कश्मीर में हैं इस वक्त, यहाँ पे दिखाएं, इनको हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाएं, इनको बेहतरीन, अपने जो हमारे बेहतरीन जैसे स्कीइंग के लिए, सॉरी, जैसे स्कीइंग हमारी यहाँ पे होती है, तो ज़रा इनके लिए तो वो नई चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे पाकिस्तान के ये ग्रीन एरिया ये दिखाएं हम। इसके अलावा हम जैसे पैराग्लाइडिंग है या बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से पीर चनासी से नीचे हम पैराग्लाइड करते हैं, इन जगहों पे ले जाएं तो ये खुश होकर वापस जाएंगे और अगली दफ़ा ये उसको भी अटैम्प्ट करेंगे, अपनी एक्सपेडिशन को भी, और पाकिस्तान का भी पॉजिटिव मैसेज देंगे। तो इसको हम चाहते हैं कि ये लोग, और इन लोगों से हमने एम्बेसडर बना लिया है पाकिस्तान का टूरिज़्म के हवाले से, कि ये जितना ज़्यादा इस पर इन्होंने देखा है ये जाके बताएंगे, और पाकिस्तान का फूड सिखाएं इनको, बताएं इनको। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग इनको, मैं इनसे पूछ रहा था, 6 हफ्तों में इन्होंने जब पाकिस्तानी फूड खाया ना, तो सिर्फ चिकन कढ़ाई खाई है या चिकन कोई खाया। तो यहाँ पे हमने 3 दिन इनको चिकन जो इन्होंने खाया हुआ था उसको चुगने के लिए हमने इनको सब्जियां खिलाई, इनको दालें खिलाई, इनको कड़ी खिलाई, इनको हमने ये पकोड़े खिलाए, इनको चटनियाँ खिलाई, इन्होंने मक्खन, इन्होंने कहा है कि ज़िंदगी में मैंने दूसरी दफ़ा फ्रेश मक्खन खाया है। तो इस तरह की चीज़ें हम इनको यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी दें, सो ये इनके लिए भी अच्छा होगा, ये खुश जाएंगे और अगली दफ़ा फिर आएंगे ये। जी बाबर भाई। Okay, Lucas, tell us about what did you like in Pakistan and what you didn't like in Pakistan. You have to be very honest so we can improve ourselves when you come next time. So definitely, like we are no Pakistan experts, so we have seen probably 5% of your country, and we had the pleasure, like not only seeing the high mountains which we came for, but we had some time left. So we are now in the Kashmir region, which we are very happy to see, like some different mountains, and then we've been told there's like deserts. You get like a rich culture, great taste of food. So it's very unique, like which kind of aspects your country combines. Like it's one country, and you probably could visit like 20 times and experience every time something new. One negative aspect we had to experience, unfortunately, is we feel like there's less awareness for like garbage. So you have like beautiful places, but people drink a Coke and they just throw away their waste. So as soon as like also the number of tourists will rise in Pakistan, probably this waste problem is getting bigger and bigger. So it would be a pleasure to see raising awareness and see all these beautiful places which are located over here, clean and nice. Okay. देखें जी, गार्बेज का कितना बड़ा मसला है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इसको तहसील लेवल पे इस पे काम होना चाहिए। कश्मीर में हम चीख के मर गए हैं कि कश्मीर आएँ, कश्मीर आएँ, कश्मीर आएँ, और जब कश्मीर में आ रहे हैं तो सामने, अब मैं होटल का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम हर होटल का नाम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टिम्बर कोर्ट में हम अपना एक ठिकाना भी बनाने लगे हैं, और इन सब लोगों से को अवेयरनेस भी देंगे। यहाँ सामने गार्बेज का बैग पड़ा हुआ है, इतना बड़ा, वो म्यूनसिपलिटी ने जिसने भी रखा है, और इसी होटल के लोग जो हैं वो सामने, इनकी मैनेजमेंट जो है वो सामने कचरा फेंक रही है। जब यहाँ पे टूरिस्ट आता है तो उसको वो सब चीज़ों से आज़ाद होके आते हैं, जैसे मज़हर भाई ने कहा। और स्पेशली ये लोग जो होते हैं ये डिसहार्ट होते हैं, क्योंकि जब ये आते हैं किसी पहाड़ को चढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उसके बाद इनको एक अच्छी इन्वायरमेंट चाहिए। इन इलाकों में सफाई का ख्याल रखें। अगर ये काम हुंजा में हो सकता है ना, तो ये पूरे पाकिस्तान में हो सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो हुंजा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ जब आप उतारते हैं तो वहाँ के लोग, वहाँ का एक बंदा वो आपको पॉइंट आउट करता है। हुंजा में कचरा फेंकना हर जगह जुर्म है, बट हुंजा में इसकी सज़ा मिलती है, तो ये यहाँ भी होना चाहिए। वन मोर थिंग, वी टॉक्ड अबाउट अ फ्रेंच गाय who died.
in his expedition, and just because he did not sign a paper, our people didn't go up and save his life first and did the formality. We want our people to improve when you come here next time. We want them to improve. So it should be, uh, uh, it is like both ways. You will come here just because you find nice people, environment, hospitality, right? And a clean environment and services. We want you guys to come here. So we need to improve it. What is the improvement in security that you guys need in when you're climbing 8,000 and this areas, those rough areas? What do you need? What extra do you need? Actually, to be fair, you have to say all the rules are clear before you come here, so you know how it works. But there's a major difference in like our rescue system in like Europe and or Switzerland, Germany. It's all the same, and the Pakistani one. So in our area, it's not about who's financing something and then helping. It's about first helping and then seeing how to finance. So even though maybe somebody's not insured, um, you always get like flown down the mountain, and if you can't pay for the helicopter, then like the um, uh, the the public is paying for it. So whenever you have any accident in Europe, it's sure you're getting helped. And it seems like with this French guy we talked about, he died on Nanga Parbat. They started a crowdfunding in Europe, but it took like 2 days to raise like $25,000, and then it was too late to rescue this man. So it's an unfortunate situation. नांगा पर्वत में कुछ अर्सा पहले एक फ्रेंच बंदा आया था नांगा पर्वत को क्रॉस करने के लिए, और उसने अपनी सिक्योरिटी और इंश्योरेंस के पेपर्स उसके पास नहीं थे, और उसने उसके बगैर वो ऊपर चढ़ गया था. लीगल इलीगल की बात नहीं हो रही. बात ये हो रही है कि वो बंदा जब ऊपर था और नीचे लोगों को पता था कि एक बंदा ऊपर है जो मर रहा है, आपने 2 दिन ले लिए कि वो $25,000 यहाँ पे जमा कराए और फिर यहाँ पे हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा. हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो भी चला रहे हैं, जो भी इन लोगों को होस्ट कर रहे हैं, हम टूरिज़्म वाले हैं, हमने इनको दोबारा लेके आना है. हम और यही बात है, अगर ये अच्छी बातें लेके बाहर जाएंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे. तो आप लोगों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन जितने भी हैं, ये 8,000 से ऊपर की जो चोटियाँ हैं, वो उसके बेस कैंप तक हम लोग नहीं पहुंच सकते. आम बंदे, ये बंदे 8,000 की चोटियाँ चढ़ रहे होते हैं. आपका जो रेस्क्यू सिस्टम है उसको 100 गुना बेहतर होना चाहिए. जगह जगह पे आपके पॉइंट्स होने चाहिए. जब सियाचिन में हमारी फ़ौज जा सकती है और उनको रेस्क्यू किया जा सकता है, तो ये गेस्ट को भी किया जा सकता है. ये सियाचिन के लेवल के जगहों पे होते हैं. तो एक ये चीज़, इसका बड़ा ख्याल रखें. टूरिज़्म बढ़ाना है, अपनी सिक्योरिटी अच्छी करनी है, अपना गार्बेज अच्छा करना है, और अपना इलाका ठीक करना है, अपनी हॉस्पिटैलिटी अच्छी करनी है, अपना रेस्क्यू सिस्टम अच्छा करना है. लिटिल बिट ऑफ Matius, speak in your language. We will translate it and say anything about Pakistan. What should we do to improve it? What do you like here? What you don't like here? Everything honestly, so we improve. When you come next time, you become happy in your language. Also, ich, gleich wie Lukas, ich bin jetzt auch nicht der Experte in Pakistan. Was mich sehr freut in dem Land ist, dass die Leute sehr, sehr nett sind. Die Landschaft und die Kultur gefällt mir da sehr, sehr gut. Und was auch für mich negativ ist, dass sehr, sehr viel Müll in der Landschaft liegt, und das würde mich wünschen, dass das halt verbessert wird. So what Matius basically said is that like it was a great experience for him, and he felt like pretty welcomed from all the people. Like you get invited for a tea on the street and all this stuff. That's something probably it's not happening in Europe, which we really enjoyed in your country. And he's also talking about like waste.
this is maybe the most negative point, like we both experienced over here, that you have great landscapes, but then the waste awareness is very low, or not there for some people. Few more things we talked yesterday. Uh, in paragliding and in skiing, we have 3 major skiing resorts in Pakistan. As Mazhar bhai told you yesterday, we have Malam Jabba. We have a skiing resort here as well, in Ganga Choti in Kashmir, and there's one in Naltar Valley. You have 3 great skiing resorts, one in Malam Jabba, Naltar, and Kashmir, Ganga Choti. You said, and you only have seen 5% of Pakistan. I would say even less than Pakistan, less than 5%. And about Austria, you said you guys have over used your facilities, your things. And in Pakistan, we haven't touched just 2% of it. Even say something about it. So we had the pleasure to see like one skiing resort, which is Ganga Choti, and like I think I can speak for my country. We have loads of skiing resorts. We have perfect slopes. That's something we don't have to travel for. Like Okay. in my area, you can reach in 30 minutes like 8 skiing resorts, and they have like perfect slopes. But what we see here is like a great like free ride potential, and you have like untouched mountains. We haven't seen Pakistan in winter, unfortunately, but he said there's like loads of snow, great snow, and so probably like free ride potential, like loads of people going to Georgia for free riding or something like this. I guess for Pakistan, this is like the same. It could be like a great free riding destination. And for paragliding, are we using our potential completely or not? I think definitely not. Like all in all, for paragliding, if you don't only want to experts to come to Pakistan, probably the infrastructure need to be there. Like there could be like we've been on Ganga Choti yesterday. There was some nice wind. You could soar for 4 hours on this mountain, and there's some nice landing areas down there. Like everything is there basically. If there's like a wind station, and like on top and down there, so it could be a very nice paragliding spot. मज़हर भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? Basically, I had a 3-day discussion with him, and we have talked a lot about it. And the two things that are most like effective here, one is just as he told me that there are too many skiing resorts in Austria, but people are bored because they think that this is cosmetic, that space is cosmetic. This space is a wild and unexplored. So there are many tourists or many like these visitors want to visit here, not only because of the skiing, but because of the wild nature of it and unexplored area. Because they said that every resort in Austria is like a city, so they have made it possible everything they have created cosmetically. So we can use this landscape as a fresh and unexplored area for them, for those experts to visit, and it will be a new like terrain for them. And secondly, I have a suggestion for our tourist companies, and also for the tourists coming from foreign countries. You see, when you come from there, you have to go through some documentation and some like permits and everything before going up. So what we can do, that there is an idea, if you can like propagate it, that you should come like a week earlier. You should land here. You should plan a landscape of Pakistan, and in the meanwhile, your process, as you have to wait for 2 to 3 days at your base camp to get your documentation clear. If that can happen in Islamabad or somewhere like on some other tourist destination, or so that you can have more time to, rather than to sit on the base camp or some things not have any facilities, you can wait at like a tourist point like this or some other places, and you can go through those documentation while waiting, just sitting in just like a duck. So, and thirdly,
we have this Ganga Choti place that is covered by MTBC. Maybe in the evening we will be having a meeting with this MTBC team, that is medical transcript billing. They are the biggest company in Pakistan for dealing with this kind of software. So they have took over this resort. So last year they have 50 Australian and some Austrian lady. He recognizes it. She is a pro skier. So she came and some other people came, and there were like a good activity going on. So we can talk to them, MTBC people, and these people will come and they can have this explored, and we can talk about in different aspects of tourism in Pakistan. One more thing, like you guys are into skiing and paragliding and everything. If we try, we will try and talk to the concerned people, and if we provide you things which are necessary in Ganga Choti, and we have a winter festival like we had last year, would you like to come here in December or January if we provide you everything for skiing and everything? One thing. Secondly, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो स्पॉन्सर कर सकते हैं, इन लोगों का सिस्टम स्पॉन्सरशिप पे चलता है. ये अपने इलाकों में अपनी जगहों पे स्पॉन्सरशिप लेते हैं और यहाँ आते हैं, और आके, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन जहाँ भी है उसका पाकिस्तान के अंदर ज़रा बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, लेकिन बाहर भी बहुत ही इतना ज़्यादा वो लोग, चूँकि ये लोग ये कॉम्पिटिशन्स और इस चीज़ में इतने ज़्यादा नहीं होते, एक्सपेडिशंस में होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. पहाड़ चढ़ने का कोई कंपटीशन नहीं है ऊपर, जिसने चढ़ लिया उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, या वो जो एक ख्वाब लेके इस प्रोफेशन में आया था वो उसका पूरा हो जाता है. इन लोगों को स्पॉन्सर चाहिए. अगर हम इन लोगों को लेके आएँ, इनकी पूरी टीम्स हैं, पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में मुख्तलिफ टाइम पे इनको लेके आएँ, इनको स्पॉन्सर चाहिए होंगे. गंगा चोटी में एक विंटर फेस्टिवल लास्ट ईयर हुआ था, इस साल भी होगा, जिसमें जीप रेसिंग है, स्कीइंग है और विंटर स्पोर्ट्स बहुत सारी होती हैं. अगर हम इनको लेके आएँ तो इनको स्पॉन्सर चाहिए होंगे. मज़हर भाई से रब्ता करें, पैकअप पाकिस्तान, आसिफ टिम्बर कोटी, ये लोग इनको होस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इनसे रब्ता करें. और अगर आप लोगों के पास कोई स्पॉन्सर्स हैं, आप स्पॉन्सर्स निकालें और देखें ये लोग आते हैं और पाकिस्तान का नाम कहाँ तक लेके जाते हैं. Any message you want to give to Pakistanis or the people who want to start climbing, paragliding and skiing? Just to answer your first question, I haven't left Pakistan and I'm already planning the next expedition. So I love to come back at any time, because I love the country, I love the people, I love the food and the culture, and I'm enjoying every minute over here. And some advice for young climbers. I think like you guys have like 300 million inhabitants, so also like probably we have 8 million inhabitants. Okay. So your country is much bigger. We have loads of good skiers, we have loads of good climbers, we have loads of good paragliders in our country. So the potential you're not only having for tourism, but only I think the sports talent potential in your country probably is unused till now. So I can advise like every young Pakistani who is having fun climbing up stuff. I only can give the message like be motivated and do what's good for your heart. That's good for your heart. Mhm. Any message in your language? We will translate it to Pakistanis who want to do mountaineering, who want to do paragliding, skiing. Give them a message. Translate it. Sure. Ja. Also ich gebe eigentlich die Message eigentlich so weiter wie der Lukas. Also ich betreibe den Sport aus meinem Herzen raus und das kann ich jedem weiterempfehlen. Skifahren, Bergsteigen, Paragliden, das muss man als Leidenschaft sehen und genau das kann ich eigentlich jedem auch weiterempfehlen. I have a message like we have like these guys are doing a great job. Like we have seen their videos. They have loads of them. So we made them to make a YouTube channel.
and we make them like the content should be on the social media, and I have stressed on them that they should create some good content, and they have already have good content. So मेरा मैसेज जो पाकिस्तान में जो जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी लोग गेम्स खेलते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि जो स्पॉन्सरशिप की जिनको तलाश होती है, उनको ये चाहिए कि वो अपनी गेम के बारे में रोज़ाना बात करें। वो एक अपने सोशल मीडिया पे आएँ, अपने यूट्यूब पे आएँ। मैंने अक्सर देखा है लोग शर्माते हैं कि जी अपने गेम के बारे में बताएँ। ना सिर्फ़ अपनी गेम के बारे में बताएँ कि उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो वेट ट्रेनिंग कैसे करते हैं, वो खाते क्या हैं। ये सब कंटेंट वो इंटरनेट पे डालें, लोग उनको देखेंगे। प्लस वो खुद मशहूर होंगे, सेलिब्रिटी बनेंगे। प्लस वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक गोल्ड मेडलिस्ट है कोई किसी भी अपनी फ़ील्ड के अंदर, या वो कम्पीट कर रहा है, उसको अपनी फ़ील्ड के बारे में बहुत कुछ पता होगा। जैसे वेट लिफ्टर है, उसको दुनिया के बेहतरीन वेट लिफ्टर के बारे में पता होगा। वो उन वेट लिफ्टर के बारे में वीडियो बना सकता है, वो बता सकता है कि आप वेट ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं, वो लोग कैसे जीते हैं। इसी तरह कोई भी बंदा जो कि जिस स्पोर्ट में भी है, वो उस स्पोर्ट की जो टॉप लोग हैं, उनके बारे में बात करना शुरू कर दे, तो वो खुद ब खुद ही मशहूर हो जाएगा उसकी। और दुनिया आपको सपोर्ट तब स्पॉन्सर करती है जब स्पॉन्सर को इन रिटर्न कुछ मिलेगा। अगर वो किसी ऐसे प्लेयर के अपने अगर 2 लाख फॉलोअर होंगे, और वो जब बात करता है तो वो 10,000, 50,000 या 2 लाख या 20 लाख लोग देखते हैं, तो उसका स्पॉन्सर गली मोहल्लों से मिल जाएगा। आपने शायद देखी होगी ये मूवी, इंडियन मूवीज़ हैं, मुख्तलिफ ऐसे मूवीज़ हैं जिसके अंदर वो क्या होता है कि प्रेशर कुकर वाले ने स्पॉन्सर कर दिया उसको कि भाई आप, यानी कि एक पहलवान को प्रेशर कुकर वाला स्पॉन्सर कर देगा, एक वो इर्द गिर्द से जो है ना वो मक्खन वाला स्पॉन्सर कर देगा। तो कई दफ़ा स्पॉन्सर के लिए आपको बहुत ऊंचा कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं चाहिए होती, आपको स्पॉन्सर सिर्फ इतना चाहिए होता है कि जो आपके खाने पीने का एक्सपेंस उठा ले, आपके ट्रैवलिंग का एक्सपेंस उठा ले। तो अपनी चीज़ को हमें खुद भी अपनी चीज़ों को इम्प्रूव भी करना है, अपने प्लेयर्स को थोड़ा सोशल मीडिया पर लेके आना चाहिए, जिसकी हमने कल बात भी की है। मज़हर भाई, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरा कोई 6 साल का एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर के साथ कि मैं स्पोर्ट्समैन के ऊपर स्पॉन्सर करवा रहा हूँ। और आप यकीन करें कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, मैं उनका खुल के नाम लूँगा, ऐसे गार्डन्स, ऐसे ग्रुप जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, और उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम कहाँ कहाँ गया। आप टेंट पैकिंग देख लें, एक गांव की गेम थी जो शहरों में आ गई है, घुड़सवारी। अब लोग इसमें आना चाह रहे हैं। अब शहर के लोग हमसे रब्ता करते हैं कि हमने नेज़ाबाजी करनी है, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग गेम है। क्यों? क्योंकि इसको शहरों तक पहुंचाया गया। हम मार्शल आर्ट्स की बात करें, मार्शल आर्ट्स को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। करते क्या हैं कि पूरे पाकिस्तान में जितने मार्शल आर्ट्स के स्कूल हैं, अब वो इनको जानते हैं। हर आम स्कूल में, बच्चों के प्राइमरी स्कूल में 90% जो गेम्स हैं उन वो मार्शल आर्ट्स की हैं, वहाँ इनका नाम आता है। हम बात कर लें स्नूकर की। अब दुनिया के अंदर लोग जानते हैं। अभी जो लास्ट हमारे 2 प्लेयर्स क्यू स्कूल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उनको भी जो लीग्स के थ्रू ऐसे ग्रुप ने ऊपर उठाया था। कहने का मकसद ये है कि ऐसे ग्रुप की भी ये एक प्रमोशन है। इसको CSR डिपार्टमेंट कहते हैं। आप अपना CSR स्पोर्ट्स पे लगाएं। बड़ी बड़ी जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, वो अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचानें। आपने लोगों को अगर स्पोर्ट्स में ऊपर लाएंगे, सबसे सस्ता स्पॉन्सर है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्पॉन्सर है। आप अपनी सेल्स देखें, उसके बाद कहाँ से कहाँ जाती है। तो एक ये चीज़ है। और हम इन लोगों को वेलकम कहेंगे। वी गाइस, we welcome you here. We would like you to come here again and again. He's a paraglider. If we encourage someone to open a paragliding school here, will he be coming here to train, or as a coach as well? Would you be coming here you're a good skier and mountain climber? Would you be giving lessons to people over here as well? If we ask some big company to hire you as a coach or something, will these be options as well? Like for sure, every time I have the possibility to share the love I have for all these sports and outdoor activities, like even at home, I'm taking these chances. And if I'm having the chance to transport what we love to do in our country to your inhabitants, then it would be a pleasure. Okay. Also, ich würde es
ob du, wenn jetzt praktisch eine Firma das zahlen würde, ob du auf einen Trip kommen würdest, um praktisch die Liebe zum Paragleiten anderen Leuten weiterzugeben. Als Ja, Mentor oder Coach. ja, ich würde es auf jeden Fall machen, um die Liebe einfach weiterzugeben, weil es ist ein schöner Sport und mich würde es freuen, andere Leute zu begeistern und mit ihnen das eigentlich zu teilen. So he basically said like for sure he would come and share our sport and culture to your people. देखें जी, पाकिस्तान के अंदर जब ये लोग आते हैं, जैसे मज़हर भाई ने कहा, स्कर्दू पे इस्लामाबाद आते हैं, स्कर्दू तक जाते हैं, स्कर्दू से केटू जाते हैं, केटू से स्कर्दू जाते हैं इस्लामाबाद और वापस अपने घर। ये आपने मज़हर भाई इतना बड़ा स्टेप लिया है। मुझे पता है कि आपको कितनी दुश्वारियाँ होंगी इन लोगों को ये ला के दिखाने के लिए। पैकअप पाकिस्तान, आसिफ टिम्बरकोटी, ये मुझे पता है आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा इन लोगों को इन एरियाज़ में लाने का, लेकिन ये पहला स्टेप है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके बाद इस एरिया की, इस जगहों की और पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में जाएगा। सिर्फ अब देखें नाज़रीन, इन लोगों के साथ क्या है, ये दोनों अपनी फील्ड के टॉप प्लेयर्स हैं और ये अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं यहाँ पे। अगर और पाकिस्तान के अंदर 2% भी जगह इस्तेमाल नहीं हो रही। हमारे माउंटेन्स आइडियल हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। सिर्फ जो बेस कैंप है उधर और टॉप पे 2 डिवाइसेस लग जाएं जिससे आपका वेदर पता चल जाए, वो इन लोगों को ये पता चल जाए कि भाई ये पैराग्लाइडिंग के लिए ठीक है कि नहीं। स्कीइंग हमारे पास बेस्ट टिप्स हैं दुनिया की, और सिर्फ वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट अच्छी मिल जाए। मैं मालम जब्बा गया था, मुझे अच्छी सपोर्ट नहीं मिली, मैं 2 दफ़ा गिरा भी था। तो मुझे मालम जब्बा के अंदर, नलतर के अंदर और यहाँ पे टिम्बरकोटी के अंदर स्कीइंग में अच्छी चीज़ें मिल जाएं, अच्छी सर्विसेज मिल जाएं, मैं बार बार आऊँगा। क्रिकेट पाकिस्तान का बहुत अच्छा गेम है, हर कोई खेलता है, लेकिन पाकिस्तान का पोटेंशियल क्रिकेट से आगे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, जिसमें फ़ॉरेन टूरिस्ट आने आना है। क्रिकेट खेलने के लिए कोई ऑस्ट्रिया से नहीं आएगा, पूरे यूरोप से क्रिकेट खेलने के लिए 12 लोग आएंगे या 12 लोगों की टीम आएगी, 11 लोगों की, लेकिन हज़ारों में लोग आ सकते हैं आपके इन पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, आपके इन स्कीइंग रिजॉर्ट्स को देखने के लिए, उनमें स्कीइंग करने के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए। आइडियल इन्वायरमेंट से पाकिस्तान पहाड़ों से भरा पड़ा है। दूर ना जाए ना, सिर्फ मार्गेला की पहाड़ियों में, इस्लामाबाद में भी बड़ा कुछ हो सकता है, चकवाल की पहाड़ियों में हो सकता है, कोयटा के पहाड़ भरे पड़े हैं। आपका 75% ऐसा एरिया है पाकिस्तान में जहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो सकती है। तो इन चीज़ों पे काम किया जाए। मज़हर भाई कोई फाइनल वर्ड्स दें इस पे, और हम काफ़ी लंबा हो गया, इसको क्लोज़ करें। अच्छा, मुझे अगर पाकिस्तान के बच्चों के, मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट से बहुत इंटरेक्ट करता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, मेरे अपने भी 4 बच्चे हैं, तो मैं उनको भी यही एडवाइस करता रहता हूँ। अगर मैं पाकिस्तान के बच्चों को एक एडवाइस दूँ ना, तो वो पैदल चलना सीखें। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में अगले जो 20 साल में जो डिज़ास्टर आएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हमारे लोगों को पैदल चलने की आदत नहीं रही। हमें पैदल चलने की आदत पड़े। हमारे पास इतने खूबसूरत माउंटेन्स हैं, जब हम पैदल चलना सीख लेंगे तो हम हाइकिंग करना सीखें। बिलीव यू मी, ये आसिफ यहाँ मौजूद हैं, ये यहाँ पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ये सारा भी इवेंट यहाँ पे लोकली यहाँ पे देख रहे हैं इसको। अगर हम यहाँ पे आ जाएं इस गंगा चोटी पे, आपको जो बंदा हाइकिंग का शौकीन है और जो बंदा पैदल चलने का शौकीन है, यहाँ गाड़ियाँ आपकी बिल्कुल टॉप तक जाती हैं, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप चल भी नहीं सकते, लेकिन चलें एटलीस्ट, अगर ऐसा होता है कि चंद लोगों में से, फैमिली में से 2-3 लोग नहीं चल सकते, 5-6 लोग चल सकते हैं, तो ये एरिया इतना खूबसूरत और अनएक्सप्लोर्ड है कि आप यहाँ पे अगर 15 दिन भी रहेंगे तो आपकी यहाँ पे पहाड़ियाँ ख़त्म नहीं होंगी। बड़े खूबसूरत ग्रासी ऊपर जो फील्ड्स हैं। तो एक तो मैसेज सिंपल ये है कि आप बच्चों को पैदल चलना सिखाएं, रोज़ाना 2-3 किलोमीटर वॉक करना सिखाएं, छतों पे वॉक कर लें, गलियों में चल लें, पार्क्स में जाके करें, और जब इस तरह की जगहों पे आएँ तो पैदल चलना सीखें। और दूसरी चीज़ क्या है कि गंगा चोटी आएँ, ये सुदन गली आएँ,
और इस जगह पे आके बिल्कुल फितरत के करीब, जैसे अब आज से 20 साल पहले मरी में एक क्राउडेड हो गया था, तो अब सीरियस टूरिस्ट जो है मरी नहीं जाता, अब वो मुख्तलिफ 10-12 और जगह खुल गई हैं। तो मेरी नज़र में ये मुस्तकबिल का ये रिज़ॉर्ट है और ये बन चुका है। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आपको अच्छे होटल्स मिलते हैं, अच्छे खाने मिलते हैं। और आसिफ भाई ने यहाँ पे पूरा एक टूरिज़्म विलेज डेवलप किया है। आप गाँव में जाके लोगों के रह सकते हैं और गाँव के खाने खा सकते हैं, और गाँव की कड़ियाँ, चटनियाँ और मक्खन और क्या कुछ मिलेगा। तो आसिफ भाई, ये बहुत बहुत शुक्रिया आप हमें यहाँ पे होस्ट करने का। थैंक यू सो मच मिस्टर मैथियस, लूकस एंड बाबर भाई, ख़ास तौर पे आपका कि आपने वक्त निकाला और हम यहाँ पे बैठे हैं। और हमारी जो बाकी प्रोडक्शन टीम है माशाल्लाह, और उनके दोस्त भाई भी बेटे भी यहाँ मौजूद हैं, आसिफ भाई भी हैं और हमारे बाकी दोस्त भी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, एंड विल हैव सेशन नेक्स्ट टाइम, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।